camps, slaughtered UN officials in blazing ambulances, Israel has turned Gaza into a living hell. Israel's incessant flouting of international law with impunity has few parallels in history. I condemn these atrocities in the strongest terms. We deeply regret the loss of human lives, including innocent civilians, women, children, and the vulnerable. Let us be clear, international law prohibits infliction of death and destruction on innocent civilians. This massacre must stop. I also appeal to the conscience of all the world leaders to play their due role in ensuring immediate ceasefire and rapid, full-scale and unhindered humanitarian assistance to Gaza. I deeply commend the hectic diplomatic efforts undertaken by Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, and other regional countries to bring the escalating situation under control. The greatest onus is on the UN Security Council members to rise above their differences and urgently perform their primary responsibility of maintaining peace and security. Human lives cannot be sacrificed at the altar of technicalities and expediencies. We appreciate the efforts of the UN Secretary General and his calls for restraint and urgent humanitarian action. We also appeal to the international media to objectively cover the ongoing carnage in Gaza. Dear brothers and sisters, Israel's occupation of Palestinian territories lies at the heart of the current crisis situation, conflagration which poses the risk of engulfing the entire region. The UN independent human rights experts have last month issued a public warning about the imminent risk of genocide and ethnic cleansing of Palestinian people at the hands of the occupying power. Injustice and brutal suppression of people are seeds of future wars, violence, and conflict. Without the early realization of the two-state solution, we will continue experiencing similar cycles of violence, which will only magnify in scale. I have no doubt that the only permanent solution to the current situation lies in the creation of a secure, viable, contiguous and sovereign state of Palestine on the basis of the pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. We must all work towards that end with a sense of urgency. Excellencies, people of Gaza urgently need reprieve. I join my brothers and sisters who spoke before me to emphasize the following. Immediate and unconditional ceasefire. Israel must be forced to halt its indiscriminate aerial bombardment and ground invasion in compliance with international humanitarian and human rights laws. Immediate lifting of the blockade and rapid and unhindered humanitarian and relief supplies. Israel, as an occupying power, must be reminded of its responsibility to create conditions for urgent delivery of food, water, electricity, and medical supplies to Gaza. We commend Egypt for facilitating delivery of relief supplies through the Rafah crossing. Pakistan dispatched 2 flights carrying humanitarian supplies on 19th October and 7th November. Strict observance of international humanitarian law must be compelled to ensure safety of schools, hospitals, places of worship, and refugee camps, in accordance with its obligation as an occupying power under international humanitarian law. We should explore the possibility of instituting proceeding at the ICJ under the Genocide Convention and in the interim request provisional measures. The UN Secretary General should be urged to establish a special commission of inquiry to investigate Israel war crimes and crimes against humanity since 7th October. We should also demand establishing an international mechanism for reparations for the Palestinians. We call for the halt of all illegal settler activity by Israel.
We call for a political solution. It is imperative that conditions are created for dialogue between Palestine and Israel to evolve a way forward through the two-state solution. Dear brothers and sisters, we had yet to overcome the shock of COVID, supply chain disruptions, climate change, and war in Ukraine before we stumbled into this crisis. At a time when the teeming billions seek peace for common prosperity, progress, and development, our world cannot afford being pushed to the brink. We pray to Almighty Allah to ease the sufferings of our Palestinian brothers and sisters. I thank you all. रियाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर जो कि इजलास से खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि गजा में अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की जा रही है, गजा में नस्ल कुशी की जा रही है, गजा में इजरायली मजालिम की पुरजोर मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी की जाए, नस्ल कुशी को रोका जाए। अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना भी चैलेंज बन गया। पाकिस्तान की पहले बैटिंग ना आई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग की और 337 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स मुश्किलात से 2-4, अब्दुल्ला शफीक 0 और फखर 1 रन बना सके। बाबर आजम 38, रिजवान 36 और सऊद 29 रन पर हिम्मत हार गए। गजा में कत्लेआम, आलिम इस्लाम का 36 रोज बाद हंगामी इजलास। रियाद में मुसलमान हुक्मरानों की रिवायती तकरीरें, जंग बंदी की तकरार। इजराइल को अल्टीमेटम दिया, न मगरबी कुव्वतों को ललकार। रियाद में ओआईसी और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी इजलास। इजराइल को मौसर पैगाम देने में नाकाम। सऊदी वली है तुर्क सदर का जंग बंदी का मुतालबा। ईरानी सदर ने कहा मुस्लिम हुक्मरानों को साबित करना पड़ेगा कि वो फलस्तीनियों के साथ हैं। इस्राएली मजालिम के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद का मुजाहिरा। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन की इस्राएल के खिलाफ नारेबाजी। खवातीन और बच्चों के अलावा व्हील चेयर पर बुजुर्गों की भी शिरकत। बरतानवी वजीर आजम की मुजाहरे पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम। चीफ पुलिस कमिश्नर ने ऋषि सुनाक की हिदायत मानने से इनकार कर दिया। गजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। इंक्यूबेटर में मौजूद 39 बच्चों की जिंदगियों को खतरा। इजरायली फोर्सेस ने अशिफा अस्पताल का मुहासरा कर रखा है, जहां 30,000 से जायद फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। वहशियाना बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। और सिंध में बड़े इत्तेहाद के लिए मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची पहुंच गया। JUI के राशिद सोमरो से मुलाकात के बाद वफ्द पीर पगारा से मिला। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। कल बहादुराबाद में एमकिम की क़यादत से मुलाकात होगी। अयाज सादिक ने कहा PP कायदीन के बयानात से उनके उम्मीदवार मायूस होंगे। वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा तो जाती उम्रा से होगा। प्रोग्राम देखिए, सवाल ये है। देखते रहिए ARY न्यूज। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में